Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? Just a minute. Uh, now I'm audible and visible. Right, everything seems to be fine. Yes, now better. Right. Good morning, all of you. Okay, so things look good. Audio and video, everything. So today we are having some particular news, है ना, जो अपने को मिलने वाली है। एंड आज हम करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस फिर से लाइक वीडियो। आज का जो डेट है दैट इज 13th of February, है ना। एंड देर आर टन्स ऑफ डिफरेंट न्यूज जो आज के लिए आज में इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं क्लैट के पर्पज से बात करूं, सो क्लैट के पर्पज से देर इज दिस बिग न्यूज फ्रॉम फॉर्मर जस्टिस आर गवई, जिसमें ही लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, एंड ही सेड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वायलेशन ऑफ basic structure. Yeah, right. So one particular law-based news that is important. Apart from this, there is economic news in which the change in the base year retail inflation and something like other thing, and then US India deal तो है ही न्यूज में। सो सबसे पहले कल के सोशल मीडिया की बात करते हैं। तो जो सोशल मीडिया में जो दुनिया भर की मीडिया में ट्रेंडिंग रहा उसमें एक तो चीज एप्स्टीन फाइल है। एंड कंटिन्यू चल रही। आई मीन यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इसने तबाही मचा रखी है, बट इंडिया एंड यूएस दैट इज समथिंग जहाँ पे अभी भी इतना ज्यादा बवाल नहीं। यस, कल जो है दैट इज लाइक जो जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड अटर्नी है डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट की, उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बात कह दी कि वी शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड बी लाइक मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस दीज पर्टिकुलर फाइल्स। एंड सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो है इंडिया में भी जो हमारे पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड गैस मिनिस्टर है दैट इज हरदीप सिंह पुरी, उनकी तरफ से आया। ओ हाय दक्ष, गुड मॉर्निंग। So Epstein file is there, that is for sure, but the reactions of different people are different. I mean, ट्विटर में कल दिन भर पब्लिक वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि किसका किसका नाम है, एंड दैट इज नॉट द लाइक ओनली डे दिस इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट लाइक वन एंड हाफ month. Everybody is getting those people out of those files, right? तो कहीं ना कहीं चीजें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सोशल मीडिया में रहा वो हिमंता विश्व शर्मा के बाद असम में जो हेट स्पीच इंक्रीज है उसकी बात हुई। एंड राहुल गांधी का जो स्पीच था उसकी काफी ज्यादा वायरल रहा न्यूज पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा मीडिया जो है उसने भी काफी मजे किए। राइट, हाँ। आई मीन आवर मीडिया वाज नॉट आस्किंग क्वेश्चन on the basic issues like what we can say, महंगाई, बेरोजगारी, road accidents, right, Epstein file and something like this, and they were discussing about the barber, right. So our media has a problem, they don't discuss about today, they discuss either about like yesterday or tomorrow। so वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था कि इंडियन मीडिया इज like getting a new low every day। so वो भी चल रहा था। खैर, let's get into the top news for the today from the newspaper itself। तो सबसे पहले तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एंड जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें कुछ चेंजेस वो किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। विल डिस्कस अबाउट इट, राइट। ओके, सॉरी, है ना। उनका ये कहना है कि दैट इज लाइक इन 2.75% अप्रोक्सीमेट जो है उसकी मतलब उसके रेंज में है। एंड बेस ईयर में कुछ बेसिक चेंजेस आए हैं। हम उसका भी डिस्कशन करेंगे, राइट। देन वी हैड दिस, क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, फिर हम बात करेंगे किसकी, यूएस अमेरिका जो सॉरी यूएस इंडिया ट्रेड डील है उसकी बात करेंगे।
इसमें भी कुछ नए पर्टिकुलर वो आए हैं, है ना? देन वी हैड दिस राइट टू हेल्थ। यस, दिस इज अ टॉपिक जो हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट टू हेल्थ, जो राजस्थान में एक पर्टिकुलर बिल आया था, वेर एवरीबडी गेट्स अ प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट, है ना? उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है हम करने वाले हैं। देन इंडिया की तरफ से नामीबिया में जो भी, मतलब नामीबिया का T20 वर्ल्ड कप था, उसका न्यूज़ था। एंड देयर आर सर्टेन न्यूज़ रिलेटेड टू लाइक बांग्लादेश इलेक्शन, राइट? उसका पहला जो इलेक्शन था आफ्टर अपराइजिंग, राइट? दैट इज आल्सो बीइंग देयर, वहां पे भी वो चीज हो चुकी है, मतलब कंडक्टेड हो गया है। तो देयर आर सम न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है, एंड उसी की हम बात करने वाले हैं, राइट? ओवरऑल फैशन में ज्यादा तो नहीं है, बट वन ऑफ द पार्ट इज वन नेशन वन इलेक्शन। यस, ये like this particular topic and this particular topic, these are two very important topic to discuss. I mean, I'm not sure how you follow parliament, but you must have seen the clips or the reels or shorts of Raghu Chadda's speech in the parliament after budget session, है ना? ये जो स्पीच है, ये आपने जरूर देखी होगी, एंड आपने उसको फॉलो भी किया होगा, है ना? मेक श्योर कि उस चीज को थोड़ा सा सेटल करें, उस चीज को थोड़ा सा वो करें, फॉलो करें कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, जिसमें उन्होंने ये बात की किस तरीके से हमने जो टैक्सेस है उसके कलेक्शन से चीजों को डिफरेंशिएट किया। फॉर सी सेड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द पीपल्स इनकम टैक्स वाज मोर देन द कॉर्पोरेट टैक्स, so somehow people should get relief. He talk about the universal health coverage, he talk about the like education, he talk about some other taxes which are which are being introduced, and they are supposed to like revoked, but they're still there. So yes, right to recall system, not recall system, right to recall system, right? Yes, उनका ये कहना है कि if there is this particular person, जैसे the people have elected a representative, and if he's not, he or she is not working in favor of people, people should not wait for 5 years to reject him in the next election. They should have a right to recall, so that every individual should uh, to the duty they are being assigned. So कई ऐसी पर्टिकुलर चीजें थी जो उन्होंने बोली, एंड अगेन एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ like educated person, he talked very precisely, and he discussed things which were actually supposed to be discussed, right? Yes, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट? तो उसको फॉलो करना जरूरी है, एंड पार्लियामेंट में जो डिबेट्स एंड डिस्कशन होती है, दैट इज आल्सो सपोज टू बी फॉलोड, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को आप समझने लगते हो डिबेट्स एंड डिस्कशन के फॉर्म में। सो लेट्स सी, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज में सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, है ना? जीरो टैरिफ ऑन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूएस पॉसिबल फॉर इंडिया, सेड गोयल। यस, सिंपल से तौर पे जो बांग्लादेश के साथ यूएस ट्रेड डील हुआ है, राइट? तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, बांग्लादेश यूएसए वाले में वी हैड लाइक डिटेल डिस्कशन ऑन दिस कि किस तरीके से टेक्सटाइल, किस तरीके से टैक्सेस एंड बाकी सारी चीजें मैनिपुलेट होंगी, एंड इफ बांग्लादेश इज इंपोर्टिंग यूएस थ्रेड एंड यूएस कॉटन and making clothes out of it, and then exporting to US, they are going to get 0% tariff on that, right? और वही बात पीयूष गोयल भी कह रहे हैं यहाँ पे, द बांग्लादेश हैज अ फैसिलिटी दैट इफ रॉ मटेरियल इज परचेज फ्रॉम अमेरिका, देन right will be available at a zero reciprocal tariff. India has also the same facility, and India will also get in the trade benefit like this. But the problem is we are one of the largest exporter of cotton, so if we are going to import cotton from US, that is another particular खर्चा, and उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जीरो टैरिफ लगेगा, तो दिस माइट बी अ पर्टिकुलर इशू। तो यहाँ पे अभी ट्रेड डील में है। सेकंड थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी किया है,
After US official said that India had to cut import from Russian oil, as the US wanted. है ना, Indian External Affairs once again refused to deny the claims. So अभी भी जो रशियन ऑयल है, राइट, रशियन जो पर्टिकुलर क्रूड ऑयल है, उस पे डिबेट्स, उस पे स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में प्रॉपर सहमति, ये कह सकते हो, एग्रीमेंट नहीं हुआ है। दो दिस इज नॉट द फाइनल एग्रीमेंट, दैट इज स्टिल टू बी फाइनलाइज्ड, है ना, दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क, तो हम इस चीज को कर सकते हैं। खैर, चलो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन 2.75% इन द न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. There are several problems with Indian economy and method of Indian economic, what we can say, calculation system. और ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी ने उस इस मैटर को राइज किया. Again, we can talk about there's a tussle between Goel's view and Jaishankar, I guess. Daksh, there is a lot of tussle going on within the government. If you follow the news in the government, you will understand. Okay, let's come to the retail inflation. So there are several problems with the Indian economy, and one of them is the calculation methods. Yes, अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक described our data as third class, that we don't get accurate data for the GDP growth and economy that we should do, right? So that is one reason. Another reason was we need to change the base year. I mean, like 20 years back, I was just like a kid, you know, a kid भी क्या, kid do whatever, like छोटू से भी छोटू. And if I compare my personality from last before 20 years old personality, that is going to be a very different criteria. So हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन है उस पे क्वेश्चन उठते ही रहे हैं. फाइनली, राइट, जाके थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. तो सबसे पहले न्यूज में चले जाते हैं, तो उनका कहना है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल है, दैट इज 2.75% इन January 2026, right? This is the first CPI retail जो हम रीड कर रहे हैं from the newly revamped consumer price index series, which transitioned the base year of 2024. So अब जाके हमने 2024 को base year माना है, which was 2012. देख रहे हो तुम? So we had a base year for the consumer price index and retail inflation that was way back Modi government. So they have changed the base year. There are certain data इस particular उसमें mention है. For example, मैंने उसको note down किया कि there are different categories और उनकी जो inflation rate है year to year, right, and base जो particular index base value है out of 100 उसकी जो उन्होंने निकाली है. So the first thing is कि all India combined जो inflation rate है, that is close to 2.75%, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. जो रूरल है, रूरल इन्फ्लेशन वाज 2.73%. The urban inflation was 2.77%. एंड जो ओवरऑल फैशन में फूड्स के ऊपर जो इन्फ्लेशन लगा है, दैट इज 2.13%. एंड हाउसिंग के ऊपर जो लगा हुआ है, दैट इज 2.05%. सो उन्होंने कुछ अलग डेटा दिया एंड लाइक लॉट ऑफ डेटा दिया, right, based on the new sorry, base year for the consumer price index. Now, what are the new changes that is being provided? हम थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं. तो the revised index introduced significant updates, right, for the measurement. The first one is they expanded the basket. Yes, number of item जो हमारे पास होते थे, जिसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन जज करते थे, वो 299 होते थे, जैसे इन्होंने बढ़ा के 358 कर दिया. सो द नंबर ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स एंड डिफरेंट आइटम्स जो हैं, उनको बढ़ाने के बाद ये जो ब्रैकेट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड like the e-commerce price, yes, and they also included OTT platform. अगर आपने OTT सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो those services are also under this particular consideration.
and then they have reduced the food weight. यस, वेट इसलिए इंक्रीज किया हुआ है अगर मैं उसके पीछे की बात करूं, because if you go for e-commerce, I'm not sure how frequently you use Zepto or Instamart or Blinkit like applications. But if you'll see closely, when they are providing you certain vegetables or fruits, they don't mention exact, what we can say, weight range. They like eat 200 to 300 grams. राइट, नहीं पहले याद करो हम सब्जी वाले के यहाँ जाते तो बोले भैया आधा किलो टमाटर तोल दो, तो यूज टू पुट a weighing what at one particular end, then half kg of tomato, so that is why they change the weight, है ना. This is to reflecting the rising income and weight of the food, and beverages जो है वो somehow अलग अलग तरीके से थोड़ा सा increase, sorry, decrease किया गया. And this is just to make system and what we can say calculation less volatile. This is other ज़्यादा हमें वो मिल पाए. Now, the third is services housing. हाँ, उन्होंने services and housing, they increased their weightage, and they also added the rural house rent, and they also get the like granular category अगर 12 different divisions international standards को match करने के लिए. So overall fashion में they had a very good step to standardize the new data for the inflation calculation and something, right? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेनिफिट है. ठीक है. सो दैट वाज समथिंग जो नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बात करेंगे. नेक्स्ट वाज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. यस, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल technically is that particular council which actually gives a thumbs up to defense purchases. Yes, let's say yesterday we discussed that how the vice chief of air staff wanted more Rafale, more fighter jet in under their command, right? And if the demand is from him, if the demand is from like a vice chief of air staff, then definitely the Defense Acquisition Council is going to be the one which will give a thumbs up. The chairman of this particular council is Defense Minister, and our Defense Minister, the Mr. Rajnath Singh, he is the chairman, and he clears the purchase of 114 Rafale for Indian Air Force and 6 P-81 aircraft for the Navy. Right? और इसमें जो good news was majority of are going to be manufactured and like sorry manufacturing services and other particular things are going to be in India. Yes. So majority of aircraft जो है उनकी manufacturing, उनकी services, the part and other particular thing they are going to happen in India, and it will give a boost to India's defense economy. इंडिया पिछले कुछ सालों से डिफेंस बेस्ड प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है. That is why we are seeing a regular defense expos. We are seeing defense deals in which we are selling weapons and other thing to other countries. So yes, overall fashion में it's going to boost our defense economy. So that is something जो कि वो है क्या कहना चाहिए positive news है, and we needed it. And you are well aware कि from last year to this year we had what we can say increased our defense budget. And why we increased our defense budget? Because we know कि हमारे प्यारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं. So overall 3.6 लाख करोड़ का ये particular acquisition होने वाला है ना. तो this is going to give a huge boost to our air force. And in the modern day combat and warfare, the air superiority is something which actually leads to the proper victory over our enemy. So let's hope for the best कि जल्दी से जल्दी चीजें आए. Okay, Haryana Supreme Court refused to give a nod to Haryana government's jungle safari project in Aravalli. Yes, Haryana government wanted to introduce a jungle safari project in Aravalli. Supreme Court says nahi, right? They said they cannot allow anyone to touch Aravalli range until the expert committee gives an opinion. So Aravalli का जो particular matter है उस पे एक वापस timeline check कर लेते हैं. So the new definition of Aravalli came.
right, in which the mountain under 100 meters were not considered as mountain. The public got angry, they get into the road, they oppose this particular decision, and finally, Supreme Court stayed on this particular definition. Then they make an expert committee, right? An expert committee was supposed to give suggestions, supposed to give what kind of changes they want to propose, and some other particular thing, and then they finally are going to discuss. So during this time, Haryana government wanted to give a thumbs up to safari project, jungle safari project in Aravalli range. But Supreme Court says until and unless expert committee gives a proper opinion and proper suggestion, we cannot allow any plan, whether that is safari or mining or anyone. राइट सो दिस इज अ गुड थिंग मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक एक्सपर्ट्स नहीं कहते तब तक के लिए तो होना ही चाहिए राइट टू हेल्थ एनीबडी इसके बारे में किसी ने कुछ सुना है कभी हम्म, कोई भी नो नथिंग चलो मैं बताता हूँ सो वी हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है एंड दैट फंडामेंटल राइट इज समथिंग जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता. One of the particular right is the right to dignified life and liberty, which include health as well. So in 2023, right, Rajasthan become the first state to get a bill, right, जो कि था right to health. Then later on, it was converted into an act. So the debate was on अगर मैं बात करूं जो रीसेंट रिमार्क्स एंड रीसेंट न्यूज हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो it still remain a subject of political debate and discussion because of a limited operational implementation. Rajasthan was the first state to give right to health, right? And it was required, and the provision was very clear. Everybody should have right to health. Everybody should have a right to proper health care, proper medication, proper other particular medical, what we can say, surgeries and other things. So it was the first one, but the implementation is questionable. Now, थोड़ा सा पहले करंट अफेयर्स में चले जाते हैं. So recently ये particular debate हुई in the assembly that it was proposed, it was one of the finest decision, but nobody is taking care of it. तो वहां से वो particular चीज शुरू हुई. जो controversy है that is also clear. It was a heated exchange, तुम कह सकते हो, between the current health minister, जो कि मतलब ये चाहते थे कि हम कुछ नई पॉलिसी लेके आए इसकी जगह. तो ये काफी कुछ उसमें हुआ. ऑपोजिशन का ये कहना है कि जो हेल्थ राइट ग्रुप्स हैं, जो अदर पर्टिकुलर चीजें हैं, दे ऑलरेडी आर बीइंग कंटिन्यूड अंडर राइट टू हेल्थ. तो आपको ये चीजें नहीं करना चाहिए. बट ठीक है. अब व्हाट इज राइट टू हेल्थ अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली जो पर्टिकुलर चीज आती है वो आती है इमरजेंसी केयर. In India, there is a dialogue which is very famous that middle class is a one hospital bill away from becoming a lower poverty line or the lower middle class or lower class, right? And ये चीज होती है. For example, if somebody under any particular accident or any other particular emergency is being presented to hospital and they don't have money at that time, the hospital cannot deny the emergency care, free emergency care to any individual. The specifics were clear in case of accidents, in case of emergency health emergency, in case of other particular thing like snake bite, scorpion bite, or something like this. The designated private hospital or public hospital, they cannot deny the free emergency care to any individual, right? Second major aspect was health facilities, health infra. They guaranteed free OPD, free IPD services. They may include consultation, medicine, diagnostic,
on all the kind of government health institutions. So they can the health infra will be more what we can say strong, right? Stronger day by day, so that we can have access to the free OPD, we free diagnostic, right, and free medicine, so that every individual should have a proper medical health care, right? And then they define the patient's right. Yes. So उन्होंने like apart from this they defined the patient's right very well, जिसमें उन्होंने बोला it includes a right to what we can say consent, access medical records, confidentiality, presence of female attendant while like female patient is there, and some other particular thing. तो उन्होंने जो वो है क्या कहते हैं patients है उनके भी right define किए under this. Then the last one was कि in case you are being denied, there is going to be a method of a grievance redressal. So if some hospital, private hospital or government hospital will deny this particular facility, you can ask for the what we can say authorities that they are denied it. सो ओवरऑल फैशन में ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पर्टिकुलर वो था. देयर वाज सम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. फॉर एग्जांपल एक्सक्लूजन में जो प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं with the fewer than 50 bed and those who did not receive subsidized land or building from the government, they were excluded from this list. हॉस्पिटल्स जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंडर हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हैं, राइट, दे ऑल आर अंडर दिस स्कीम एंड द स्कीम वाज फैंटास्टिक, एवरीथिंग वाज गुड. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू हेल्थ. वी हैड सीन द कोविड 19, राइट. कोविड 19 के टाइम पे भी जो पार्लियामेंटेरियन है उनमें स्पेशली देयर इज दिस पर्टिकुलर parliamentarian from the Bihar Rajya Sabha, that is Professor Manoj Jha. He talked about a collective failure of last 70 years government in the COVID, and he said कि ये किसी एक सरकार का फेलियर नहीं है, ये सारी सरकारों का फेलियर है कि that a common man was not having a bed access to the bed during COVID, access to the oxygen cylinder to the during COVID, or access of a proper medical health facilities during this kind of situation, right? So he started talking about right to health. He said, now this is the good time that we should provide a universal health coverage and we should provide the right to health to everyone. But nobody listened to him and health का बजट हमारा कंटिन्यू रहता. एंड जैसे कि मैंने बोला कि राघव चड्ढा ने अपनी स्पीच में ये बात बोली भी है कि दुनिया भर की कंट्रीज जो है वो 10% 12% 14% खर्च करती है हेल्थ पे बिकॉज दे नो कि जान है कि जान है. इंडिया 0.5% में चला गया. So after 2030, sorry, 2020, 2021 COVID pandemic, we should have increased more and more in the health infra, but we are reducing the health budget. तो problem तो है. So that is the right to health. And Rajasthan was like from being my side, Rajasthan एक बहुत ही बढ़िया स्टेट था जिसने ये चीज स्टार्ट की थी, but nobody listened to him. So problem तो है. Now Goa nightclub fire, court denied the bail to the Luthra brothers. है ना, उनका सीधा कहना है कि जो दिसंबर एंडिंग में उसमें क्या कहते हैं नाइट क्लब में फायर हुआ था, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है द लूथरा ब्रदर्स, सौरभ एंड गौरव, आई गेस दैट वाज द नेम, राइट. इन दोनों को हम बेल नहीं दे सकते बिकॉज दे किल्ड मोर देन there were 25 people, more than 25 people who died. Okay, so moving on to the next news. uh, Again इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं बट लेट्स अगेन सॉर्ट इट. MEA, Ministry of External Affairs, declines to deny US claim on the Indian-Russian oil import. अभी भी एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है. जो सीनियर यूएस ऑफिशियल हैं उनका मानना है कि दे वोंट बाय, इंडिया हैज रिड्यूस द यूएस ऑयल व्हाइल एम्बेसडर जो वो है सॉरी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उनका कहना है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ रशियन ऑयल इन द फ्रेमवर्क सिस मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो यहाँ पे चल रही है. Then Muslim bodies opposes notification on the Vande Mataram.
Yes. Yesterday we saw that particular news in which the government of India, central government, notified that in schools and other particular public institutions and something, जो हमारा national anthem है उसके पहले national song वंदे मातरम गाया जाएगा. The Muslim bodies are opposing this notification because they said that these might harm our what we can say religious freedom. Yes, sorry. उनका ये मानना है कि जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है वो क्या कहना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टैंजा से क्या हो सकती है सॉरी इस पर्टिकुलर सॉन्ग से हर्ट हो सकती है एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द एससी रूलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग तो ये है प्रॉब्लम नाउ व्हाई दे आर सेइंग इट उन्होंने एक क्लियर कट आंसर तो नहीं दिया है बट उनका एक सिंपल स्टेटमेंट आया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ blatant attack on a religious freedom of the minorities. And he said that some verses of the song were based on beliefs that portray homeland as deity. It contradicts the belief of monotheistic religion. इनका सीधा मानना है कि जब आप होमलैंड को एक डीटी एक भगवान की तरह पूजा करते हो तो जो एकाकी पूजा करने वाले एकाकी गॉड पूजा करने वाले मोनोथेटिक जो पर्टिकुलर रिलीजन होते हैं ये उनके अगेंस्ट आता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस फ्रीडम ऑफ रिलीजन सो दिस इज रॉन्ग और इसको वापस लेना चाहिए बट ठीक है क्या कर सकते हैं है ना ओके एक और न्यूज कानपुर से भाई साहब you followed it like tobacco baron's son Shiv Mishra get a bail anyone किसी ने फॉलो किया था नो किसी ने भी फॉलो नहीं किया you should have actually followed it this was absolute what we can say India है ना बताता हूँ क्या 8th of February को oops, कानपुर में there is this one particular person who was driving a Lambo ठीक है and पहले he hit the rickshaw then he hit like three four people one of the Activa guy people and the eyewitnesses says he flew for like 10-12 feet and then it was struck in some pole and Lamborghini was hurt not the people Lamborghini was hurt that was I get in the news ठीक है and the bouncer of this particular person, the Shivam Mishra, they get him out of that car and they took him at somewhere. Then they parked the car at certain place, and uske बाद से he was not available at any place. He was wandering around from one place to another place. Mm, the case was so stereotypical accurate. Okay, I'll discuss this. So until 12th of Feb, he was not available for arrest or anything. But by the 12th of Feb, he was arrested. By this time, there is another person named as Mohan, right, who came out and says, I was driving the Lamborghini and Shivam was not driving the Lamborghini. Shivam had a seizure attack. Right. And because of that, I started handling him. And मेरी गाड़ी जाके भिड़ गई. And his lawyer also backed the same story by Mohan. And Shivam Mishra was arrested on 12th of February. And he got the bail on like the same day with a bond of 20,000 rupees. Huge sum of 20,000 rupees. राइट मैंने इस केस में एक वीडियो देखा था जिसमें नीचे कमेंट था दैट कमेंट वाज हिलेरियसली डार्क राइट उसने ये बोला था कि अच्छा ये हादसा कानपुर यानी यूपी में हुआ है इस बार ऐसे जो है ना वो पुलिस लिखेगी एक्चुअली वाज द कमेंट प्रॉब्लम था so he got a bail and the case is still going on nobody talked about how
and what kind of damages the victims had. Police, on the other half, gave a very clear-cut statement that they have video proof that Shiva Mishra was driving the car. So let's say they put out that particular proof into the court, and then he should be jailed for his bad crime. हाँ, there is one particular thing जो अभी यहाँ पे नेगेटिव हो गई है और नेगेटिव हो गई पुलिस की साइड से वो ये कि शिवम was not arrested on the like same day at the place of accident. So his like breath analyzing test or something like this, it was missing. So nobody can prove it whether he was under the influence of alcohol or any other drugs or not. So this is negative that is was in case. And let's talk about the simultaneous election and the basic structure mentioned by Justice Gavai, right? Yes. One nation, one election. ये आज के one of the most important topic में था. So क्या one nation, one election पहले होता था? The answer is yes. Right. अभी क्या होगा, कैसे होगा, इस पे जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो रिव्यू कर रही थी. So what is joint parliamentary committee is reviewing and how the things are coming out. अगर हम उसकी बात करें तो so in 2024 what we say yes 129th amendment bill जो है वो पेश किया गया था वो प्रेजेंट किया गया था and which was one nation one election and then it was went to joint parliamentary committee और उसके बारे में डिस्कशन था. So the proposal was to synchronize all the elections, whether that is state assembly election, Lok Sabha election, right, and eventually the local body election. And वो अभी भी joint parliamentary committee में था. The committee was chaired by the BJP MP PP Chaudhary and currently hearing the experts testimonies. And यहाँ पे expert testimony में जो former Chief Justice of India है B.R. गवई उनका वो आया क्या कहते हैं स्टेटमेंट आया है on yesterday he mentioned that the proposal does not violate the basic structure of constitution as it only changes the time and the method of election while leaving voters right and federal structure intact. So उनका ये मानना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करता है क्योंकि because it only changes election timing, right? And it has nothing to do with the voters' right and the federal structure का जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ भी नहीं है. है ना? What are the 129th bill? Aims to synchronize the state assembly election and Lok Sabha election. एंड इनका सीधे तौर पे ये मानना है कि ये सारी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज सॉरी सिंक्रोनाइज होंगी. फेज 1 में लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, फेज 2 में लोकल बॉडी इलेक्शन, राइट, विद इन द 100 days ऑफ जनरल इलेक्शन. एंड देयर इज गोइंग टू बी एन अपॉइंटेड डेट जो प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई करेंगे और उसके बाद चीजें शुरू होंगी. नाउ what they get, what were the favor they gave in, like, what was the argument they gave in favor of one nation, one election? They said it will reduce the pressure on governance, it will reduce the cost, yes, of elections, it will reduce the resources distribution, and it will also reduce the voters, what we can say, fatigue. है ना? सो उनको हमारी बहुत ही ज़्यादा चिंता है. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. सो द गवर्नमेंट माइट नीड 2/3 मेजॉरिटी. सो अभी इसलिए ये थोड़ा सा क्या है अभी रुका हुआ है. नो प्रॉब्लम इज रिसेंटली जनरल इलेक्शन हैपेंड लास्ट ईयर, है ना, लास्ट ईयर, एंड इट वाज कंडक्टेड आई गेस इन 7-8 phases. अभी बंगाल का इलेक्शन होता है, बिहार का या यूपी का बड़े स्टेट्स का इलेक्शन होता है. दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन द सेवरल phases. So how the governance and how strong the administration can put this particular thing on picture that governance are going to be easy, right? Second thing they talk about the governance problem की जो politicians हैं जो MPs हैं they have to travel regularly at the election state and they have to make rallies and other particular thing तो उससे काम थोड़ा affect होता है. The answer of this particular question is तो मत जाओ, but people are going. Like there is an election that is 4 months ahead.
but our home minister, our prime minister, some other ministers are already in that particular state. तो है, थोड़ी सी चीजें हैं, but that is also correct that it will reduce the cost, and it will also reduce the increase the government efficiency for working and some other things. So होगा ये कि जिन like let's say there is a date notified. So if there is an assembly, state assembly, which is supposed to be dissolved earlier than that, it will extend at certain point. If there's assembly which is supposed to dissolve after the date, so that will be dissolved within the date. तो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, बट कहानी चल रही है. फिर एयरलाइन सेज प्रपोज्ड ड्यूटी नॉर्म्स फॉर क्रू विल हर्ट द प्रोडक्टिविटी. ये वही एयरलाइंस हैं जिन्होंने हमें ऑलमोस्ट 13 दिन के लिए होल्ड पे रखा हुआ था जब इंडिगो वाला प्रॉब्लम हुआ था. सो उनका ये कहना है कि जो डीजीसीए के नए नॉर्म्स है फॉर द ड्यूटी एंड रेस्ट, दैट विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एयरलाइन. Yes, DGC gave some new particular norms that what are the hours of duty, what are the hours of rest, and how a person can operate, like when a person can operate by long trips and something like this. So airlines का कहना है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करेगा. टिपिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर. सो जो वो है कि कहना चाहिए ट्रेड यूनियंस हैं जो किसान यूनियंस है, दे सेड द नेशन वाइड स्ट्राइक ड्रॉस 30 करोड़ पार्टिसिपेंट, है ना. कल उन्होंने बंद रखा हुआ था. देयर इज नो नॉट इंटिमिडेटेड बाय द सब्सटैंटिव मोशन बाय द सेज बाय द बीजेपी सेज केसी वेणुगोपाल. सो पार्लियामेंट में बढ़िया चल रहा काम, है ना. कांग्रेस डिमांड्स हरदीप सिंह पुरी's resignation over the references in Epstein file. Uh, but I think that was the old time when people used to resign, but not this time. So हरदीप सिंह पुरी का अपना ही पर्टिकुलर वो था. उन्होंने like I have seen a particular minister clarifying, a minister actually giving clarification on something from like very long period of time. I haven't seen that. But finally, this is something जो कि हुआ है. The conclusion is not reached yet. AI 171 Pro अभी भी जो एयरक्राफ्ट सॉरी एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट वो हुआ था लास्ट ईयर जून में एक्सीडेंट हुआ था, उसकी फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुंचे हैं, ऐसा कहना है. किसका? द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का. ठीक है. देन स्टीव न्यूज में तो कुछ खास नहीं था. एंड फाइनली जो बिजनेस न्यूज है उसमें यूएस ट्रेड डील चाहिए. मेक श्योर टू रीड दिस वन एंड दिस वन, है ना. इसमें काफी अच्छे से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्यों वंदे मातरम के अगेंस्ट ये लोग वो करते हैं, है ना. मतलब क्या डिस्कशन होना चाहिए क्या नहीं, राइट. तो ये थोड़ा सा है, but he didn't have anything especially. He was asking investment from the hedge fund manager. Again, Daksh, this is one particular thing जो हमें समझना चाहिए. That is, if somebody's name in that file, that doesn't make them criminal or like offender like Jeffrey Epstein, right? But still, there are certain moral grounds. अगर तुम यूके की पॉलिटिक्स फॉलो करो या स्कैंडिनेविया की पॉलिटिक्स फॉलो करो, तो यू रियलाइज कि वहां पे तो सिर्फ नाम आने से लोगों की रेजिग्नेशन हो गए. एंड ब्रिटेन की जो वो है सरकार है फिलहाल, दैट इज इन डेंजर, राइट. And this is Rolls-Royce says eyeing on tenfold rise in India's sourcing. Tenfold. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब हम कहते हैं तू क्या है, राइट. यस. मतलब सोचो, रोल्स रॉयस कह रही है कि इंडिया में हम 10 गुनी बढ़ोतरी करेंगे. पैसा ही पैसा है इंडिया में, तुम्हें पता नहीं है. चलो, रशिया confirms ban on WhatsApp, says it failed to abide by the law. यस, रशिया ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया है. उनका ये मानना है कि इट्स नॉट अबाइडिंग द लॉ, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द सर्विसेज ऑफ व्हाट्सएप इन द country. Second, polling ends the Bangladesh. Right, this was the first election after the Sheikh Hasina's government and the uprising. Imran Khan's is left with only 15% vision in the right eye, uh, says Amicus Curia. So Imran Khan, जो former prime minister of Pakistan है,
राइट, वो जेल में है एंड उनकी जो राइट आई है उनका विजन से 15% रह गया है। दिस वाज नथिंग मच। कल का मैच धमाकेदार था, इफ यू वांट फॉलोड इट, देखना भाई साहब। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, भाई पागलों की तरह कुटाई कर रहे थे। खैर ठीक है, दैट वाज अ गुड थिंग। मजा आया मैच देख के, अगर नहीं देखा तो जरूरी नहीं है कि देखो। ओके, रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर गाइस? यस, चलो। सो क्वेश्चन नंबर वन, Commerce Minister Piyush Goyal stated that India may receive a zero tariff benefit on textile exports similar to which country? किस देश की सिमिलर इंडिया को जीरो टैरिफ ऑन टेक्सटाइल जो है वो मिलेगा? ऑप्शन आर वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, मेक्सिको। बताओ। कम ऑन। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ही ये पर्टिकुलर चीज हुई थी। तो बांग्लादेश में ही ये वो होगा प्रॉपर सेटल। चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Under the new consumer price index series, with the base year 2024, the retail inflation for January 2026 was recorded at. So नए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज है जो 2024 बेस ईयर में है, उसके हिसाब से नया रिटेल प्राइस जनवरी 2026 में क्या है? 4.10, 4.10, 3.52, 2.75, 5.01। बताओ। टेल मी। वेरी करेक्ट, 2.75, हमने बात भी करी थी अभी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The consumer price index base year was revised from, consumer price index का base year revise हुआ है कौन से साल से? 2004 to 2024, 2010 to 2024, 2012 to 24, 15 to 24। बताओ। Anyone? The answer is 2012 to 24। ठीक है, it was 2012, जो था वो base year था, उसे 24 कर दिया गया। Very good, Daksh. Moving on to the next one. The Defense Acquisition Council cleared a procurement of how many Rafale fighter jet for the Indian Air Force? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने राफेल खरीदने का वो क्लियर कर दिया है? प्रोक्योरमेंट ऑप्शन है 36, 72, 90, 114। बताओ। वेरी गुड, 114। गुड गुड गुड। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग वाज चेयर्ड बाय, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग है उसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शंस आर अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर। बताओ दोस्तों। ऑब्वियसली राजनाथ सिंह द डिफेंस मिनिस्टर। हाँ या ना? इनके सील साइन होंगे तभी तो आगे बढ़ेगी मामले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Bangladesh held a general election to replace the interim administration that took charges after the fall of government led by. So, Bangladesh में recently general election हुए हैं to replace the interim government, interim administration, है ना? That took charge after the fall of government led by.
ऑप्शंस आर खालिदा जिया, मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना, एचएम इरशाद। बताओ किसकी सरकार गिरी तब इंटरिम गवर्नमेंट या इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना वो संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट। वेरी गुड, शेख हसीना। राइट। यस, मोहम्मद यूनुस करेंटली उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, but it was Sheikh Hasina's government which fell the last years in the last year uprisings. चले, which former Chief Justice of India stated that simultaneous election do not violate Constitution's basic structure? किस फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोली कि जो वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट करते हैं? ऑप्शंस आर जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, बी आर गवाई। बताओ। वेरी गुड, जस्टिस वी आर गवाई। चले नेक्स्ट वन। Supreme Court recently refused permit to a jungle safari project until the clarity emerged on the definition of. So Supreme Court ने recently एक जंगल सफारी प्रोजेक्ट को मना कर दिया until the proper clarity on the definition आए किस चीज की? Options are Western Ghats, Shivalik Range, Aravalli Range, Vindhyan Range. यस, अरावली रेंज हरियाणा वाला केस अपन बात कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट का। गुड। राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द राइट टू हेल्थ इन विच ईयर? किस साल राजस्थान ने राइट टू हेल्थ को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो दिया था? राइट, ऑप्शंस आर 2020, 21, 22, 23। इजी था, पर ने डिस्कस भी किया था। किस साल राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था राइट टू हेल्थ? 2023? यस और नो? आफ्टर कोविड ऑब्वियसली। 2023 यार। दक्ष, थोड़ा सा ध्यान देना। चले, Rajasthan become the first state. Okay, so we repeat the same particular question again. So this is it from my side for today, and that was the news analysis for today, right? And I hope you guys enjoyed it. Yes or no? Hi Anna. Right. So this is it from my side for today. And ask a news analysis यहीं तक. I'll see you in the next session. Uh, No, like today's news wasn't much special because the things are like कि uh, वही पुरानी चीजें चल रही है। आई मीन सेम पर्टिकुलर थिंग, वही सारी चीजें। ट्रम्प को, हाँ मेरे को भी ऐसा अभी फॉर नाउ ट्रम्प इज बीइंग व्हाट वी कैन से हाइडिंग ना। एप्स्टीन फाइल में देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ नेम, ये thousands of time, I'm not sure, I guess million time लिखा हुआ था। There are thousands of time where Trump's name was there. तो अभी तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पे लगा हुआ है कि किस तरीके से चाचा को बचाया जाए, है ना? तो ये एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है कि चाचा आजकल बीमार होके बैठे हैं। नहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो करने के लिए तैयारी रहता है। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। मजे करो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो वन नेशन वन इलेक्शन एंड राइट टू हेल्थ, है ना? ये एक अच्छे टॉपिक हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस साल के उसमें। आफ्टर बीइंग लॉन्ग टाइम किसी टॉपिक को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। चलो, so I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Have a good health, have a good mental health. लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। See ya, guys.